Lecture 16. The topic of this lecture is Case Study Generating Small Scale Business Customers with Social Media. Contents for session 16. In this session, we are going to study the meaning of social media, the importance of social media, and we will study the case study regarding how the small business is operated with the help of social media. Now let's discuss some important facts of business. 36% of all social media users have posted about a brand or products and same point of time. 61% of all the social media users are willing to give feedback about brands on social network. 42% of the social media users have had at least one direct conversation with the brand on social network. 85% of users were never contacted with company or brand despite posting a negative review about it. 82% of the people stopped doing business with the brand in question as a result. Now let's discuss the importance of social media in today's world. First, staying connected with the people. It is next to impossible to meet your friends and relatives every day in today's world of increasing stress and workload. However, dropping a short text, asking about their day, or sharing your achievement are a few ways you can still maintain healthy contact with your close ones or corporate colleagues. Social media platforms have effectively bridged the communication gap. Next importance is staying opinionated. In our daily lives, we may not necessarily be surrounded by people who think in the same direction as we do. A difference in opinion is bound to occur. However, we can share our opinions safely and even find people online who think the same way as us on social media platforms. It even paves the way of gaining a strong voice for the situation you feel are essential to discuss and have fruitful discussions. The third point is entertainment. There is so much more to social media than just work, communication, and branding. Sometimes all we want is a little entertainment at the end of the day. Social media platforms provide tiered individual and customized feed consisting of memes, news, and short clips of videos as per the user's activity. It provides people with a much needed break from their busy schedules. Now let's discuss the benefits of social media for businesses. First is direct contact with target audience. Thanks to social media platforms, you do not have to call or email every randomly to check if they are interested in your brand or not, which almost the whole world on social media. It is possible that your target audience is simply a click away from you. Using hashtags are directly connect you with your target audience. Next is increasing the popularity with ease. For people in the content and digital marketing area, the ability to attract popularity is what matters most. The social media platforms provide such a section of people with precisely what they are looking for: increased exposure. Carrying out simple, engaging tasks such as answering queries, posting times, and so on would ensure that you blow up on these sites and some time. Even though it requires some time investment, the hefty return was worth and at the end of the day. Next is better traffic.
Since there is widely diversified of active people on social media, the scope of diverse traffic is also there. Optimizing social media per your need can ensure that you receive visits and traffic from various people. Since today people are on their phone most of the time, it is highly likely that people would come across to your brand or work. Proper usage of keywords and other SEO guidelines would also ensure heavier and better traffic. Next is creating a lasting image. If you are looking to work so that your piece of content leaves an imprint on the viewer's brain, using social media is the best way to go about it. Granted, people do look at the emails too, but how often can we find people spending hours suffering through their email? In contrast with people love spending countries hours suffering through social medias on their phones. Hence, if you are optimize your work efficiently there, you will likely leave your mark. Next is collaborations. Another effective way of social media platforms benefit businesses is by providing the means of collaboration with appropriate accounts. Today, there are many influencers on every social media platform, each open to promoting the product they deem fit for their followers. Businesses looking to grow journally contact such influencers who do pay ads on their pages, bring heavy traffic to the business accounts. Next is availability of tools for analysis. Another aspect of social media is that fuel. Its importance among us, the business and content creator, is in the option to look into the inside. Hence, business and content accounts can analyze their post and understand what post gained the most popular and why, and how they can improve their feeds. On Instagram, there is an option for post insights for professional accounts, where one can see what post got the most saves, likes, and results. Last benefit is get inspired. Since most content and business pages are public, one can quickly go through their feeds and gain inspection. If your account is not doing expectedly well compared to the other account in the field, you can analyze their fields and see what you are missing out of. Fixing this problem that can help you to boost your popularity immediately. Now let's discuss social media for businesses functions. Marketing. The most obvious and common use of social media in business work because almost every brand has a section of target audience online today. Human resource. Great for identifying and engaging the talent directly. Also enable companies to showcase employee benefits and culture to outside world. Third, creative. Sharing enable art, copy and design teams to get new idea, learn new things and experiments. Next is operations and strategies. Site like LinkedIn helps in connecting with domain expert who can share valuable strategic insight. Last is business development. B2B company can use professional networking sites to connect with prospective clients. Now let's discuss social media for leadership. First is visibility in the industry among peers and team members. Second, reputation. Use of social media built a CXO reputation as a progressive, fearless and confident leader. Third is approachability. For clients and team members, a CXO active on social media is a sign of approachable
and transparent company. Last is good for business. A leader who is seen positively on social media will help the business through his personal brand. Now let's discuss the top social media networks for businesses. First is Facebook. Highest advertising revenue of all social media sites, ideal for FMGs, lifestyles, apparel, and luxury brands to build presence and advertise on. Second, Twitter. Favorite rent corner for most consumers, microblogging feature take away the pressure of compelling or grammatical errors. Next, LinkedIn. LinkedIn must be a serious business and companies looking to mine data, manage knowledge, or be thought leaders. Next is blog. Still in favor for serious or lighter communication, great for SEO. Last is Pinterest. Ideal for design, art, and pre-media agencies. Now let's discuss the importance of blog and contents. Contents is still the king, even as text gives way to audio visual. Huge factor in searchability. A good well marketed blog can save a lot of money otherwise paid to an SEO company. Next is data and knowledge management through internal and external blogs. Companies can create domains, expect and share knowledge with clients, peers, and employees. Through leadership, again, a big blog with very good content positions you as a leader in the domain. Now, let's discuss a way forward for effective self help groups. First, the government should create a supportive environment for the growth and development of self-help group movement. It play an important role of the facilitator and promoter. Second, self-help group movement should be expanded to credit deficient areas of the country such as Madhya Pradesh, Rajasthan, state of the Northeast. Third, financial infrastructure should be expanded including that of NABARD by adopting extensive IT-enabled communication and capacity building measures in these states. Next, extension of self-help groups to urban pre-urban areas. Effort should be made to increase the income generation ability of the urban poor as there has been a rapid rise in urbanization and many people remain financially excluded. Next is government functionaries should treat the poor and marginalized as viable and responsible customers and as possible entrepreneurs. Self-help groups mentoring cells should be established in every state. The cell should have directly linked with the district and block leveling mentoring system. The cell should collect both quantitative and qualitative information. Last is commercial bank and NABARD in collaboration with the state government need to continuously innovate and design new financial products for these groups to meet their needs. Now, let's discuss the role of the self-help groups in women empowerment. Self-help groups movement is one of the most powerful incubator of women resilience and entrepreneurship in rural areas. It is a powerful channel for altering the social construct of gender in villages. Women in rural areas are now able to create independent source of income. While there were many young semi-literate women who have homegrown skills, the absence of capital and regressive social norms prevent them from taking a full plunge in any decision-making role and setting up their own independent business. Women are working in multiple sectors as business correspondents, bank shakhas, kishan shakhas, and pashu shakhas.
Now let's discuss the case study. The name of the guy is Pavan Sharma. His age is 20 years old. He is an undergraduate from PGGC 11 Chandigarh. He is the community social entrepreneur. Now let's discuss the objective of this study, that is to provide employment to the small scale manufacturers, increase the reach of customers by social media platforms. For any problems, the major cause is poverty. So over poverty, our objective is to work at the ground level. Use every resources while being aware of nature and its care for its business. Besides of the hobbies of poetry writing, craft, singing and theatre, Pavan Sharma is really active in social work. When the wave of the dreadful pandemic COVID-19 was on the peak and unemployment was all over there, he used the social media platforms to provide employment to the small scale manufacturer via Haitashi. Basically, the work done was useless to usefulness, like waste to wealth. Made paper pens to avoid plastic, that is even environmental friendly thing. He sell diyas, kullards and pots of porters of the villages that help them to generate extra income. He also promote women self-help groups. He helped the women and grabbed the big deals for stitching the clothes. It will automatically results in women empowerment and the income is generated during the tough pandemic time. He identified the various business opportunities and work on it and it will positively results in the employment and income generation of the poor people. The outcome was that they explored the ideas into reality through earning by learning, helped in developing rural economy through digital marketing, helped in improving the standard of living of rural areas. होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। शून्य से शिखर तक पहुंचने की मिसाल, गुलामी की जंजीरें तोड़ आत्मनिर्भर बनने का सपना करके साकार और 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की क्षमता रखने वाला सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सर्वोपरि देश है भारत। परंतु इस प्रगतिशील एवं विकसित रंगमंचीय पर्दे के पीछे एक ऐसा स्थान भी है जो दर्शकों की दृष्टि से सदैव ओंझल रहा है। भारत रूपी रंगमंच का वह स्थान है भारत का ग्रामीण क्षेत्र, जहां शहरी परिवेश के नागरिक अपनी भावनाओं को शून्य कर बैंक में शून्यों को बढ़ाने की दौड़ में मग्न थे। वहीं एक छात्र ने सामाजिक उद्यमी के रूप में जन्म लेकर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की मैत्री करवाने का निर्णय किया। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। कामयाबी के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों पर भी चलना पड़ता है। नमस्कार, मैं पवन शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ में बीए ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ। बचपन से ही कला में मेरा बहुत रुझान रहा है, फिर चाहे वो संगीत हो, कविता लेखन हो, शिल्प हो या फिर थिएटर में अभिनय करना। तो एक कला प्रेमी से सोशल एंटरप्रेन्योर बनने की बुनियाद 2021 में रखी गई, जब हमारे कॉलेज में वेस्ट मैनेजमेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया। बहुत गहन विचार के बाद मैंने पाया कि भारत प्रतिवर्ष 160 से 240 करोड़ प्लास्टिक पेन्स मार्केट में उतारता है और एक बार इन्हें इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है।
इन्हीं आंकड़ों से प्रभावित होकर मैंने एक पेपर पेन बनाया तथा अपनी प्रस्तुति प्रतियोगिता में दी। जहां एक पेन में 15 से 55 ग्राम प्लास्टिक का प्रयोग होता था, वहीं इस पेपर पेन में केवल 1 से 2 ग्राम प्लास्टिक की रिफिल का इस्तेमाल हुआ। उस प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कृत किया गया तथा मेरे इस विचार की बहुत सराहना हुई। इसी से प्रोत्साहित होकर शुरू हुआ मेरा सफर सामाजिक उद्यमी बनने का। अध्यापकों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से मैंने प्लास्टिक पेन की कीमत से आधे दाम में वह पेन अपने सहपाठियों और परिजनों को बेचे, जिससे मुझे एक अच्छी आय प्राप्त हुई। मेरे सभी मित्रों और शिक्षकों ने इसकी पुरजोर प्रशंसा भी की। जब धीरे धीरे इसकी बिक्री बढ़ी तो हमने प्रकृति माँ की रक्षा की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए इन पेन्स के पीछे कुछ सीड्स डाले, जिससे फेंके जाने पर वह पेन पुनः एक नवीन पौधे में जन्म ले सकता था। इसी दौरान सोशल मीडिया की धरा पर अंकुरित हुई हितैषी। हितैषी अपने नाम से ही स्पष्ट करती है कि वह सभी का हित चाहने की एक पावन पुनीत धारणा है। हमने आधुनिक जरियों का लाभ उठाते हुए हितैषी नाम के अकाउंट्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनाए तथा उसके माध्यम से अनेक ग्राहकों तक पहुंचे और इससे हमारी बिक्री में भी अनपेक्षित इजाफा देखने को मिला। कुछ 5-6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर दीपावली से कुछ दिन पूर्व एक सोशल सर्विस ड्राइव के कारण चंडीगढ़ के स्लम्स में मेरा जाना हुआ। वहां का परिवेश हमारी निजी जिंदगी से बिल्कुल हटकर था। ना वहां कंक्रीट के जंगल थे, ना वहां आधुनिक एडवर्टीजमेंट्स थी और ना ही कोई पुख्ता सेलिंग परचेजिंग की सुविधा। वहां के एक कुम्हार परिवार से बातचीत के दौरान मुझे यह पता लगा कि वह लोग भारी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम हैं, परंतु ग्राहकों का उन तक ना पहुंच पाना ही उनकी इस दारुण स्थिति का एकमात्र कारण है। दीपावली पास थी। उनके पास असंख्य दिए, कुल्हड़, मंदिर तथा बर्तन आदि तैयार थे, परंतु वह उसे बेचने में बिल्कुल असमर्थ थे। मेरा मन यह जानकर बहुत हताश हुआ। बहुत असहाय महसूस करते हुए मैंने उस रोज उनकी स्थिति को परिभाषित कर लिखा कि रातों की कालस बढ़ती है जब दर्द की मदिरा चढ़ती है। रातों की कालस बढ़ती है जब दर्द की मदिरा चढ़ती है, घुटन रगों में पलती है, हर्फ ब हर्फ उमड़ती है, तब सांसें गले उतरने को डरती हैं। जब कोई इच्छा मरती है, जब कोई इच्छा मरती है। इच्छा की चिता जलाने को मरघट में आंसू आते हैं, टूटे दिल को देने ढाहस सुबकियां संग संग लाते हैं। बदन ठंडा पड़ता है तब आत्मा जलती है, जब कोई इच्छा मरती है, जब कोई इच्छा मरती है। उन आस उम्मीदों के महलों पर मैं आघात नहीं करने दूंगा। उन आस उम्मीद के महलों पर मैं आघात नहीं करने दूंगा। मर मिट जाऊंगा पर किसी की इच्छा नहीं मरने दूंगा, कि इच्छा नहीं मरने दूंगा। फिर अगली ही सुबह अपने मित्रों के साथ हितैषी का सहारा लेते हुए हमने उन कुम्हारों के सभी उत्पादों को अपने अकाउंट्स पर अपलोड किया तथा वहां पर उनका पुख्ता दाम डालकर उन्हें बेचने का प्रयत्न किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। फलस्वरूप मुझे उनके द्वारा कुछ बख्शीश के साथ साथ उन झुर्रियों भरे चेहरे पर नम आंखों के साथ एक संतुष्टि भरी मुस्कान देखने को मिली। फिर हमने ऐसे और मैन्युफैक्चरर्स की खोज की तथा हितैषी सोशल अकाउंट्स के जरिए उनका सामान न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि अन्य राज्यों में भी बेचा, जिसमें राजू टोकरी बनाने वाले, संगीता स्वेटर बनाने वाली, सुमृत्रा सिलाई बनाने वाली तथा बिमला देवी दिए बनाने वाली आदि शामिल थे। इस प्रकार हमें इन छोटे निर्माताओं की दुआओं के साथ साथ
एक अच्छी एवं स्थिर इनकम आनी शुरू हो गई थी। इस तरह सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ हमने पर्यावरण की रक्षा हेतु भी बहुत से कार्य किए। जब हमने पाया कि सभी मार्केट्स में जूस कॉर्नर और स्ट्रीट फूड वाले सभी लोग अपने कचरे का यूं ही दुरुपयोग कर रहे हैं तथा उसे कूड़े में फेंक रहे हैं, तो हमने एक एक वेंडर के पास स्वयं जाकर उनका गीला कचरा जैसे कि फलों के छिलके, कागज की प्लेट्स, सब्जियों का अनुपयोगी हिस्सा खरीद लिया तथा मिट्टी के साथ उस गीले कचरे को डिकम्पोज करके एक अति प्रभावी खाद बनाई तथा हितैषी के माध्यम से उसे बेचा। शहरी क्षेत्र में इसकी बिक्री बहुत तीव्रता से बढ़ी तथा सभी ने इसकी बहुत बहुत प्रशंसा भी की। हमारे विद्यालय में भी इसकी बहुत ही प्रशंसा हुई तथा मुझे भी बहुत सराहना मिली। इस तरह आज हितैषी सभी के हित की कामना करता है तथा सदैव हमारे समाज और पर्यावरण की उन्नति हेतु कार्यशील रहता है। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेरे बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है, माना कि हिम्मत टूटती है आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पे ग्रहण लगा और रात अभी गहराई है, पर कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल, वो आज नहीं तो कल होगा।